पहले ही बात हो चुकी होती है जिनको लेकर दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं। 40 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है ये। ऐसे में प्रधानमंत्री के इस दौरे से रक्षा क्षेत्र के अलावा आप कैसे संभावनाओं का आकलन करते हैं? किन क्षेत्रों में दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं? जी, ये जो अभी जो हमारे प्रधानमंत्री की जो विजिट हो रही है ग्रीस में, ये मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। और क्योंकि ये जो हमारे रिश्ते हैं, ये पिछले खास करके मान के चलिए कि 5-10 साल में एक जो है गतिशील ग्रहण की है। क्योंकि उससे पहले ऑफकोर्स हमारे राष्ट्रपति भी गए थे 2018 में, और उसके पहले राष्ट्रपति कलाम भी विजिट किए थे ग्रीस में। और ग्रीस के जो लास्ट प्रधानमंत्री है वो 2008 में आए थे। लेकिन उस समय 2008 भी इसलिए महत्वपूर्ण है कि लोगों को याद होना चाहिए कि ग्रीस थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस में चला गया था, और उसको बल्कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक के द्वारा उसको जो है कि बेल आउट करना पड़ा था, और IMF से भी लोन लेना पड़ा था। लेकिन क्योंकि मैं वहां रहा हूं, मैं वहां दिसंबर तक था, तो वहां एक बहुत ये आशाजनक बात है कि इन्होंने इस क्राइसिस को, खास करके ये जो अभी के जो करंट प्रधानमंत्री है मित्सोटाकिस, जो कि अभी दोबारा मेजॉरिटी से चुन के आए हैं। और इनका एक मुख्य कारण क्यों दोबारा चुन के आए, क्योंकि इन्होंने जो आर्थिक संकट था उसको उसके समय में बहुत अच्छा इन्होंने निभाया। और बल्कि 2022 में पिछले साल इन्होंने IMF का जो कर्ज था उसको 2 साल पहले चुकता कर दिया जी। तो ये दिखाता है कि इनका जो फाइनेंशियल रेजिलियंस बोलेंगे अगर इंग्लिश में, तो वो काफी अच्छा दिखता है जी। तो और इस जैसे बताया गया कि जो हमारे मुख्य मुद्दे हैं भारत के लिए, उनको वो सपोर्ट करते रहा है। और ये जो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी 2021 में गए थे, तो मैं वहीं था जी। तो ग्रीस भी जो है इंडिया के भारत की तरफ बहुत आशाजनक देख रही है। अमृत लोगो जी, समझना चाहें क्योंकि आप वहां रहे हैं अभी तक, बहुत बीते समय तक, तो 40 साल की एक तरीके से स्थिरता के बाद में भारत और ग्रीस के संबंधों में जब एक बार फिर से तेजी आती दिखाई पड़ेगी, कौन से ऐसे मेजर सेक्टर्स होंगे जहां पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है या ज्यादा सहयोग की संभावना पहले दिखाई पड़ती है आपको? नहीं, जैसे आर्थिक जो मामलों में है बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। और जैसे कि बताया गया कि ग्रीस का जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि वहीं से जो जैसे ही आप सुएज कैनाल जो है वहां से निकलते हैं, तो सबसे पहले मेजर पोर्ट जो यूरोप का है वो ग्रीस हिट करता है। और दूसरा ये कि इसको देखते हुए कि जब ग्रीस का जो आर्थिक चैलेंज आ रहा था, तो चाइना को मौका लेकर के बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। जैसे कि एथेंस के पास एक बंदरगाह है पीरियस, और जिसको कि अभी चाइना शिपिंग कंपनी ने इन्वेस्टमेंट के द्वारा ले लिया था 2009-10 में। और जब चाइना ने उस पोर्ट को लिया था, उस बंदरगाह को, तो उसका जो नंबर था यूरोप में वो 26वां नंबर था, जो कि कार्गो वगैरह हैंडलिंग के मामले में। अब जो है वो नंबर 4 पर आ चुका है, और पिछले साल देखा जाए, और आगे लगातार उसके वॉल्यूम बढ़ते जा रहे हैं, और वो जो बंदरगाह विस्तार पर है। तो भारत को भी कई जो वहां के बंदरगाह है वहां पर निवेश करने के लिए भारतीय पार्टियों को ग्रीस मौका दे रहे हैं। और 2019 में इसीलिए जो वहां का जो सबसे प्रेस्टिजियस थेसलोनिकी जो ट्रेड फेयर होता है, उसमें वो ठीक कोविड के पहले कि भारत को उन्होंने जो है कि पार्टनर कंट्री के रूप में बनाया था। और उसका जो मुख्य जो एम था वो यही था कि इंडिया को जो है कि आर्थिक मामलों में और से और जो है कि वहां पर मौका मिले। और उसका एक और आधार नमूना है कि जो हमारे GMR कंपनी है, वो एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बना रही कस्तेली में, जो क्रीट आइलैंड में। और लोगों जी, ये भी कहा जा रहा है कि ग्रीस अपने बंदरगाह भी देने को तैयार है, वहां पे शिपिंग कंपनीज को भी इनवाइट कर रहा है। तो बहुत से ऐसे मोर्चे हैं जिन पर ग्रीस भी आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन हमारे संवाददाता शैलेंद्र भी वहां पर हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र,
हम हमेशा देखते हैं कि जो हमारे भारतवंशी होते हैं वो दूसरे देशों में जाकर वहां के विकास में भी अपना योगदान देते हैं और भारत के एम्बेसडर के तौर पर वहां जाते हैं। ऐसे में अब चूंकि प्रधानमंत्री ग्रीस जा रहे हैं तो ग्रीस में रह रहे भारतवंशी और ग्रीस के स्थानीय लोग भी भारत के प्रति क्या रुझान दिखाते हैं। देखिए, हमने बहुत सारे लोगों से बात की, खासतौर पर तो भारत के लोग यहाँ पर रहते हैं। तकरीबन 14,000 से ज़्यादा भारतीय यहाँ पर रहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं। वो बहुत उत्साहित हैं कि 40 वर्ष बाद भारत के प्रधानमंत्री ग्रीस के दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो सुनना चाहते हैं और जो बदलाव हुए हैं भारत में, विकास में जो तमाम उल्लेखनीय सफलता मिली है उसके बारे में यहाँ पर वो सुनते रहते हैं। चंद्रयान 3 की जो ऐतिहासिक सफलता हुई उस पर लोग बात कर रहे थे। हमने देखा कि कई जगह उसको लेकर जश्न भी मनाया जा रहा था, भारत माता के जय के नारे भी लग रहे थे और इस तरह से एक खुशी जाहिर की जा रही थी कि ऐसे मौके पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस एथेंस आ रहे हैं तब भारत के खाते में एक और ऐतिहासिक सफलता जुड़ी है। और आज भारत डिजिटल क्रांति में जिस तरह से आगे है, कई लोगों ने यह भी कहा कि जिस तरह से यूपीआई का लेन देन होता है जब वो भारत जाते हैं, यहाँ पर उतना अभी एथेंस में प्रगति नहीं हुई है, उस तरह का डिजिटल लेन देन नहीं होता। खासकर टैक्सी जब वो लोग चलाते हैं, नगद पेमेंट करना होता है। इस तरह की तमाम बातें कही कि किस तरह से भारत उल्लेखनीय तौर पर आगे हुआ है, सफलता हासिल हुई है। यहाँ पर हम भारत से आए कुछ पर्यटकों से भी मिले जो इंदौर से आए थे। हम जानते हैं कि इंदौर लगातार कई बार से सबसे स्वच्छ शहर के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने बताया कि बहुत जगह पर वो यहाँ पर घूमने गए, लेकिन कई जगह ऐसी थी जो इंदौर से काफी कम साफ सुथरी थी। यानी भारत कितनी साफ सफाई के मामले में भारत के शहर कितने आगे गए हैं उसका वो जिक्र कर रहे थे। और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है उस बारे में हर कोई बात कर रहा था। यही वजह है कि भारत के लोगों के साथ जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें लोग उत्सुक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। और ठीक जिस जगह पर मैं खड़ा हूं यहां पर एक रिहर्सल हो रहा है। ग्रीक के लोग, ग्रीक की छात्राएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने स्वागत कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी और भारतीय संगीत, भारतीय कला और ओम गणेशा के नाम से ये एक पूरा कला का प्रदर्शन किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय संस्कृति का किस तरह से कला का विस्तार हो रहा है। बॉलीवुड के सॉन्ग लोग यहाँ पर गा रहे हैं, बॉलीवुड के जो हीरो हैं उनके यहाँ पर फैन फॉलोइंग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि रिश्ते भारत और ग्रीस के बीच मजबूत हो रहे हैं। उसमें कला, भारतीय जो संगीत है वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एक आधार कहीं ना कहीं कला संस्कृति हमेशा रहता है। अमृत लोगो जी, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, आप अभी कुछ वक्त तक वहां भारत की तरफ से सेवाएं दे रहे थे, तो आप बेहतर तरीके से इस बात को रख पाएंगे परिप्रेक्ष्य में कि ग्रीस के लोगों का भारत के प्रति नजरिया और हाल फिलहाल में जिस तरह से भारत ने एक विकास यात्रा और सबको समाहित करके विकास यात्रा को लेकर अपनी एक ट्रैक रिकॉर्ड से विश्व मंच पे एक नई पहचान बनाई है, उस बदलते नए भारत को लेकर ग्रीस की एक क्या अप्रोच है, क्या सोच है और यहां से रिश्तों को आगे ले जाने को लेकर वो क्या सोचते हैं? जैसे मैं कहा ना, ग्रीस जो है कि भारत की ओर खास करके जो अभी के जो रूलिंग पार्टी है और उसके पहले भी जो 2019 से पहले जो पार्टी थी उन्होंने ही भारत को, उसके समय ही हमारे राष्ट्रपति गए थे। तो चाहे कोई भी पार्टी हो तो ये दिखाता है कि जो ग्रीस का जो जनरल में जो चाहे उनके लीडरशिप हो या उनके लोग हो, इंडिया की तरफ बहुत देखते हैं। जैसे कि हमारे जेएनयू जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में भी ग्रीक स्टडीज का एक चेयर है। दिसंबर में एक वहां पर कार्यक्रम हुआ था ग्रीस को लेकर के। हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट मीनाक्षी लेखी जी उसके मुख्य अतिथि थी। उसके अलावा जो है कि जो हमारे प्रधानमंत्री के जो मन की बात प्रोग्राम होता है जी, तो जब मैं था तो वहां पर 2 बार हमने जो ग्रीस के एक स्कूल में छात्राओं ने एक भारतीय संस्कृति पर बहुत अच्छा ये गाना और आइटम पेश किया था जो कि प्रधानमंत्री को बहुत पसंद आया था। और वहां पर ग्रीस के एक बासिंदा है जिनको कि हमारे प्रवासी भारतीय दिवस वाले कार्यक्रम में भी बुलाया गया था कि वो मतलब ग्रीक है वहां के, जो बहुत अच्छा हिंदी जानते हैं। उन्होंने भारतीय
जो संगीत के इंस्ट्रूमेंट्स है उन पर एक बहुत अच्छी किताब निकाली है हर क्षेत्र से, चाहे इंडिया का उत्तर पूर्व हो, चाहे वो दक्षिण हो, चाहे पश्चिम हो। बहुत ही उसको सराहनीय किया है। उसको भी प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में सराहनीय उनकी जिक्र की थी। तो इस तरह से, और जो क्योंकि हमारा जो यूरोप में एक ग्रीस का यूनिक पोजीशन है कि हमारे दोनों जो सिविलाइजेशन है बहुत ही पुराने हैं और बहुत से पुराने लिंक्स हैं, और जो कि दोनों ये जो हम ग्रीक लोग जो है और जिनको कि हम लोग अपने भाषा में यूनानी कहते हैं ये जो, और भारतीय में बहुत मेल जोल है। और एक दूसरी चीज है कि ग्रीस के जो राजदूत भारत में रहे हैं वो भी जब वापस गए ग्रीस तो वो इतने प्रभावित थे कि कई लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी किताब लिखी है। अच्छा, जो उन्होंने भारत से सीखा। ये मान सकते हैं कि जो दोनों देशों के बीच के पुराने रिश्ते हैं वो आज के दौर में भी उनमें गर्माहट बढ़ ही रही है। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि जब विदेश मंत्री ग्रीस के दौरे पर गए थे तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर भी एक हस्ताक्षर हुए। लेकिन क्या हम ये भी कह सकते हैं कि रक्षा क्षेत्र के साथ साथ ऊर्जा क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच में संभावनाएं हैं? इन क्षेत्रों में आगे बढ़ने को लेकर क्या दिखता है आपको? क्या क्या ऑप्शंस, क्या विकल्प, क्या संभावनाएं? नहीं, बहुत से संभावना है, क्योंकि एक तो जब विदेश मंत्री जब ग्रीस गए थे तो उसी समय 2021 में ग्रीस ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस ज्वाइन किया था। और ग्रीस ने क्योंकि वहां पर जो है कि सूरज का जो किरणें है काफी अच्छा प्रचुर मात्रा में आती है, वो जो सोलर एनर्जी में उन्होंने काफी विकसित किया है। और दूसरा उनके पास विंड एनर्जी जो है, वायु का जो एनर्जी, उसमें उन्होंने काफी आगे बढ़े हैं। तो और वो इसमें इसीलिए उन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस ज्वाइन किया था। और दूसरा हमें यह है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें ग्रीस का नंबर बहुत अच्छा आता है यूसेज में यूरोप में, टॉप 10 में है। वो करीब उनका 30% एनर्जी जो है रिन्यूएबल एनर्जी से होता है। वहां पर एक आइलैंड है, क्योंकि ग्रीस में बहुत सारे इस तरह के आइलैंड्स हैं। एक आइलैंड जो है कि मैं नाम भूल रहा हूँ, जहाँ की जो ऊर्जा जो वहाँ यूज होता है वो पूरा रिन्यूएबल एनर्जी से होता है। इवन जो उनके कार वगैरह चलते हैं बैटरी वाला जो ये करके, और होटल वगैरह सब उसी से होता है। तो इसमें बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। और संभावना वाला सर हो सकता है, क्योंकि भारत भी लगातार इस दिशा में काम कर रहा है और वक्त की थोड़ी सी पाबंदी है। शैलेंद्र, एक अंतिम सवाल आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि कल का दिन आपके लिहाज से बड़ा व्यस्त होने वाला है, प्रधानमंत्री का बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहने वाला है। क्या मुख्य कार्यक्रम रहने वाले हैं कल? थोड़ा विस्तार से संक्षेप में बताइए जरा। देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एथेंस ग्रीस पहुंचेंगे उनका भव्य स्वागत किया जाएगा, सेरेमोनियल वेलकम होगा। और उसके बाद वो यहाँ पर जो अज्ञात सैनिकों की जो समाधि है वहाँ जाएंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत होगी, सीईओ और जो थॉट लीडर्स हैं उनके साथ अलग से बैठक है। और सबसे जो अंतिम कार्यक्रम है वो कम्युनिटी इवेंट है, जिसमें जो भारत के लोग हैं उनको संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसको लेकर खासा उत्साह हम देख रहे हैं। तैयारी हो रही है, रिहर्सल हो रही है। तो पूरा कल का दिन बहुत व्यस्त रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो कार्यक्रम, जो ग्रीस का दौरा है, उसमें तमाम महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, लेकिन सभी की निगाहें इस बात पर लगी होंगी कि कौन कौन से अहम समझौतों पर एक तरह से सहमति बनेगी। चूंकि प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता है, हम जानते हैं कि इसके बाद प्रेस स्टेटमेंट भी आएगा, क्या महत्वपूर्ण बातें कही जाती हैं उस पर भी नजर होगी। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतवंशियों को, भारत के लोगों को संबोधित करेंगे, प्रधानमंत्री कैसे भारत और ग्रीस के रिश्तों का जिक्र करते हैं, भारत के जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनके योगदान का जिक्र करते हैं, उन सब पर भी सभी की निगाह रहेगी। बिल्कुल ठीक शैलेंद्र, और जाहिर है कि प्रधानमंत्री के इस दौरे पर भी हमारी सबकी नजर रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमृत लुगुन जी और शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्रीस से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए शुक्रिया। पीएम मोदी के ग्रीस दौरे को लेकर वहां रह रहे भारतवंशियों में तो उत्साह है ही, अलग अलग देशों में रह रहे भारतीय समुदाय के लोग भी उत्साहित हैं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने ग्रीस की राजधानी एथेंस घूमने आए भारतीय और भारतवंशी पर्यटकों से खास बातचीत की। ग्रीस में जो भारतवंशी हैं, जो यहाँ पर घूमने आए हुए लोग हैं अलग अलग देशों से, एथेंस में, वो बहुत उत्साहित है। हम उनसे बात करेंगे। सब कुछ किया है, सबके लिए भी अच्छा किया है, गरीब लोग के लिए भी अच्छा किया है।
और मैं मानती हूँ कि वो फिर भी आएगा। बहुत अच्छा किया है मोदी जी। टेम्पल बना रहा है, वो भी फिनिश हो जाएगा जनवरी में, हम लोग उसको भी देखने के लिए आएगा। और वी आर रियली प्राउड है कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है हमारा, और आउटर साल में भी होएगा। सब कुछ अच्छा काम कर रहा है, इंडिया के लिए सब अच्छा काम कर रहा है, उसी लिए वी प्राउड ऑफ देम टू मोदी। आप भारत गई हैं कभी? अभी गई हूँ, फरवरी में जाके आई थी। बहुत बदल गया है। पहले जो सोच रखा था और जब आप गई, कितना बदला है भारत? बहुत बदला है। सब कुछ आसान था। एक जगह से दूसरा जगह जाना है या कि बैंक जाना है, या क्रेडिट कार्ड भी, अमेरिकन क्रेडिट कार्ड ने सब काम किया, इंडिया में काम किया। कुछ भी खरीदना था मेरे लिए बहुत इजी था। जो हमारी कंट्री में चीजें अवेलेबल हैं आज की डेट में, हम अगर कहीं बाहर आते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता कि ये कुछ बहुत ही अलग है। एवरीथिंग इज देयर इन आवर कंट्री ऑल्सो। जो चीजें पहले इजीली अवेलेबल नहीं थी, इजीली एक्सेस नहीं था, चाहे वो बड़े बड़े ब्रांड्स बोल लो, शोरूम्स बोल लो, कार्स बोल लो, इंफ्रास्ट्रक्चर बोल लो, बिल्डिंग्स बोल लो, कंपनीज बोल लो, एवरीथिंग इज देयर। तो अपनी कंट्री से बाहर निकल के डेफिनेटली ये रियलाइज होता है कि इंडिया ने बहुत ग्रो किया है। आज से 10 साल पहले हम हनीमून के लिए आए थे, उस समय जो कंट्री थी और अभी जो है, बाहर से वहां से यहाँ आने पे काफी अच्छा फील होता है। एंड अगर हमें एज एन इंडियन कोई नहीं जानता, अगर मोदी बोल दो, बस इतना सा नाम ले लो, तो एवरीवन नोज कि हाँ ओके दे बिलोंग टू दैट कंट्री। 2014 से बाद अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन देखो इंडिया की, आपको हर जगह पे ग्राफ ऊपर दिखेगा। कुछ अभी भी हैं चीजें जो इम्प्रूव हो सकती है, बट ओवरऑल जो इमेज बदली है, जब आप बाहर निकलते हो कंट्री से बाहर, जो आपको फीलिंग मिलती है, जो हमको एक आदत पड़ गई है। मेरे को जो यहाँ पे कन्वीनियंट लग रहा था इंडिया में, अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो, यू कैन टेक योर फोन एंड पे एवरीथिंग ऑन द मोबाइल। अब हम यहाँ जहाँ फॉरेन में आए हैं फॉर एग्जांपल, तो हमको जैसे टैक्सी में पे करना है तो कार्ड पेमेंट्स एक्सेप्ट नहीं होते हैं, यू कांट पे थ्रू फोन, राइट? सो यहाँ पे कैश में देना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ ग्रीस आ रहे हैं, इस बारे में जानने को लेकर बहुत उत्साहित हैं और कुछ याद कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आगे ले जाने का काम किया है, भारत को आगे ले जाने का काम किया। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि तमाम लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कैमरामैन शैलेंद्र चौहान के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, एथेंस। और एथेंस में बड़ी संख्या में भारतीय भी रहते हैं और भारत में हो रहे विकास कार्यों और भारत को लेकर दुनिया का नजरिया कितना बदला है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र एथेंस के एक भारतीय रेस्टोरेंट में गए। बिल्कुल, और वहां मौजूद भारतीय लोगों से पीएम मोदी के ग्रीस दौरे को लेकर उनकी राय जानी। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस आ रहे हैं और यहाँ पर एथेंस में इस बात को लेकर खासा उत्साह देखा जा सकता है। यहाँ हम एक भारतीय रेस्टोरेंट में मौजूद हैं, जो एक भारतीय द्वारा चलाया जा रहा है। तमाम यहाँ लोग जो भारतीय खाने को पसंद करते हैं, न केवल भारतवंशी बल्कि ग्रीस के लोग, एथेंस के लोग बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं भारतीय भोजन का लुत्फ उठाने, भारतीय भोजन का स्वाद चखने। तो यहाँ पर हम आए हुए हैं, बात करेंगे लोगों से, जानेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कितना उत्साह है लोगों में। देश तरक्की पे जा रहा है, हमारी जीडीपी ग्रोथ अच्छी हो रही है। उत्सुकता मुझे बहुत है और यहाँ इंडियन कम्युनिटी में बहुत ज्यादा है। जब से ये खबर आई है कि मोदी जी आ रहे हैं, यहाँ लोगों से मिलना चाहते हैं, अपने लोगों से, जैसा कि उन्होंने अभी पीछे इंडिपेंडेंस डे पे बोला कि मेरे परिवारजनों, 140 करोड़ जो मेरा परिवार है, मैं उसको संबोधित करता हूँ। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी गर्व की बात है कि जो उनका परिवार उनके देश की सीमाओं से बाहर रहता है, वो उनको भी सदा अपने दिल के करीब रखते हैं, उनको प्यार करते हैं और जब भी उस जगह जाते हैं तो बिना अपने परिवार को मिले वो वापस नहीं जाते। कोई बंदे उनको शेयर भी करते हैं, पर जो इन्होंने किया है, ओवरऑल किया है, वो जब आप देखें वो इंडिया के लिए अच्छा है, बिजनेस अच्छा है। इंडिया पहले कहते थे डेवलपिंग कंट्री है, अभी वो स्टेट आगे चल चुकी है। जैसे जे लोनर लैंडिंग अभी हुआ है, और जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो नहीं बिलीव कर रही हैं, पर अभी अब कम इकोनॉमी इंडिया है। मोदी जी ये जो किया है मेक इन इंडिया का बारे में, वो कंसिडर करके ये हम फर्स्ट इंडियन कंपनी है कौन रोबोटिक मिलिंग टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है इंडिया में। सो हम एक्सपेक्ट कर रहा है इंडिया और ग्रीस का रिलेशनशिप और इंडस्ट्री में भी ज्यादा हो जाएगा, तो हमको अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा चांसेस मिलेगा करके। बहुत अच्छा लगता है कि ये वीक में ही नरेंद्र मोदी जी आएंगे यहाँ पे और बहुत प्राउड फीलिंग होती है इंडियन बनने में और देखने में कि
नरेंद्र मोदी जी ने कितने देशों की हेल्प की है कोरोना वायरस के दफा उस वक्त सभी कंट्रीज को हेल्प की है, बहुत प्राउड फीलिंग होती है। लोगों के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो वेट कर रहे हैं मोदी जी के लिए, क्योंकि वो कब आएंगे और कब हमारी जो है पहचान एक इंडिया के अंदर निकलेगी। तमाम वो लोग जो भारत से जुड़े हैं, भारतवंशी हैं, भारत में पैदा हुए या फिर किसी दूसरे देश में जाकर अब कारोबार कर रहे हैं, वो भारत की बढ़ती हुई साख से प्रसन्न है। और ग्रीस एथेंस में यहाँ पर जब हम आए हुए हैं, सभी को प्रतीक्षा है, इंतजार है, उत्सुकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, देखने के लिए उत्साहित हैं तमाम भारतीय और एथेंस में रहने वाले लोग। कैमरामैन एस चौहान के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, एथेंस, ग्रीस। तो भारत की विकास यात्रा से प्रभावित हैं सभी। फिलहाल न्यूज नाइट में यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार बात होगी चंद्रयान 3 की, तो आप बने रहिए हमारे साथ। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। ये म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। म्यूचुअल फंड्स ऐसे डायरेक्ट प्लान। म्यूचुअल फंड स्कीम्स में खुद इन्वेस्ट करने का एक ऑप्शन है। खुद ही? हाँ, लेकिन ये सोच समझ कर करना पड़ता है। म्यूचुअल फंड्स की नॉलेज होनी चाहिए। सही है ब्रो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. 20,000। 10। ओके। दोनों? नो 10 का 1। इतना कैश नहीं है। कोई बात नहीं, हम यूपीआई भी लेते हैं। मेरा पेमेंट ऐप अलग है। कहीं जूते वापस मिलने की जगह जूते पड़ ना जाए। ऐप दूसरा हो या तीसरा, चाहिए बस यूपीआई। आपका मोबाइल नंबर ही बन सकता है आपका यूपीआई नंबर। और अब किसी भी पेमेंट ऐप से कोई भी पेमेंट ऐप पर यूपीआई चलेगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज नाइट के इस विशेष अंक में। और अब बात चंद्रयान की। चंद्रमा की सतह पर अगर बात की जाए तो कैसे चंद्रयान 3 ने कल जब कदम रखा तो उसके साथ ही भारत ने वो कर दिखाया जिसका लंबे समय से इंतजार था। बिल्कुल, और कल से लेकर अब तक चंद्रयान का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपने तयशुदा अभियान के तहत ही काम कर रहा है और जरूरी जानकारियां भी इसरो को भेज रहा है। बिल्कुल, और भारत के इस मिशन पर कल से लगातार देश भर से और दुनिया भर से बधाइयों का तांता लगा हुआ है। यह वह ऐतिहासिक पल जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। चांद पर सफलता की भारतीय इबारत लिखने के बाद प्रज्ञान रोवर अपने मिशन में जुट गया है। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के बाद लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान अपने काम पर लग गए हैं। इसकी पहली तस्वीर अब सामने आ गई है। तस्वीर में विक्रम लैंडर के चंद्रमा की सतह पर उतरने के कुछ घंटों बाद रोवर को बाहर निकलते हुए दिखाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने लैंडर के साथ एक संचार लिंक भी स्थापित कर लिया है, जो अब चंद्रमा की जानकारी जुटा पाएगा। एस सोमनाथ ने बताया कि चंद्रयान 3 मिशन के महत्वपूर्ण अंग प्रज्ञान रोवर के पास 2 उपकरण हैं। दोनों चंद्रमा पर मौलिक संरचना के निष्कर्षों के साथ साथ रासायनिक संरचनाओं से संबंधित जानकारी देंगे। Pragyan has 2 instruments. Both are related to elemental composition finding on the moon as well as chemical composition. इस खबर को यहीं पर रोकते हुए फिलहाल हम आपको सीधे लिए चल रहे हैं जोहान्सबर्ग, जहां विदेश मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहा है। As you're aware, this is a special media briefing on the occasion of the visit of Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, for the 15th BRICS Summit. Even as we speak, one of the elements of this event is still underway at the convention center nearby. However, since Prime Minister would be leaving later today evening, we have organized this media briefing, and we have the privilege of having with us Shri Vinay Quatra, Foreign Secretary of India, to give us a sense of the conversations that have taken place and answer your questions. We also have with us Mr. Prabhat Kumar, High Commissioner of India to South Africa on the dais, as well as Mr. Ninad Deshpande, Joint Secretary in the Multilateral Economic Relations Division of the Ministry of External Affairs in New Delhi. Sir, may I give you the floor?
Thank you very much, High Commissioner Prabhat, friends from the media. Thank you very much for coming here this afternoon for this special briefing on the ongoing visit of Honorable Prime Minister of India to South Africa for the 15th BRICS Summit. As you all know, Prime Minister arrived in South Africa on August 22nd, day before yesterday, to participate in the 15th BRICS Summit. And you also know, as has been announced much earlier, that the summit is being held under the theme BRICS and Africa, Partnership for Mutually Accelerated Growth, a theme which has been captured, reflected across various sessions of the BRICS, including the latest session which is currently ongoing, which is essentially the BRICS Africa outreach, as also the BRICS Plus format, where more than 64 participating countries, international organizations are currently engaged in discussion. Prime Minister's first engagement soon after his arrival was the BRICS Business Forum Leaders Dialogue. Very important and a significant part of intra-BRICS cooperation is the BRICS Business Forum. Held a day-long session which was concluded by the BRICS leaders themselves in the evening of 22nd, in which they outlined their own respective visions of how their respective economies can interface with the business ecosystem, business forum ecosystem of the BRICS countries, and in turn contribute to the growth and prosperity of the BRICS countries themselves. In his address, Prime Minister highlighted several key aspects, but I would broadly touch upon four. One, which I just said, that Honorable Prime Minister highlighted that the BRICS Business Forum is one of the key pillars of intra-BRICS partnership among the BRICS countries. Two, what is the significance of India's growth story? What is its value for the intra-BRICS cooperation through the modality of the BRICS Business Forum? The opportunities that the India growth story presents, the value proposition that it brings, whether it is in terms of trade, technology, capital, or all elements of that. Three, given the kind of larger churn and uncertainty that we are all experiencing around the world, he did speak about an important element of the need to develop resilient and inclusive supply chains. We all saw during COVID how the disruption in the pharmaceutical supply chains so adversely affected many of the countries' efforts to provide health security to their citizens. So it was something, a prime example of that. And three, for last, of course, the importance of mutual trust and transparency as the intra-BRICS countries cooperate and grow forward. Later that evening, on the 22nd, Honorable Prime Minister participated in the Leaders' Retreat, which was a closed-door session meant only for the leaders. Yesterday, Prime Minister attended the structural sessions of the BRICS Summit, and later in the evening yesterday, the dinner and the cultural event hosted by the Honorable President of South Africa, President Cyril Ramaphosa. Today, as I just mentioned a little while ago, the BRICS leaders are currently participating in the BRICS Africa outreach and the BRICS Plus dialogue, which 65 countries across Africa, Asia, and Latin America. In his address today to the BRICS Africa outreach and to the BRICS Plus event, Honorable Prime Minister highlight what he is a very strong believer in, and he has led this right from the front, is what the BRICS brings on the table for the Global South, for the larger Global South. Honorable Prime Minister himself led the first Voice of Global South Summit ever earlier in January this year, ahead of substantive and intense engagement of G20 leadership beginning. And the whole idea was to really understand from the countries of the Global South as to what are their priorities, what are their concerns,
what do they want from G20, which is of value to them? Yes, some of the countries of the Global South are a member of G20, but most of them are not. What are their developmental priorities? How do they see financing from the world for their developmental priorities across different areas? And that's, in a way, he sort of captured a very distilled sense of it in his remarks today. And he also emphasized, as he himself has been, that BRICS should also be a voice for Global South, for the larger Global South, not just for the priorities of the BRICS countries themselves. And he also stated what has always been one of the driving impulses of India's policy, which is a close partnership with Africa, and to be a very strong, reliable, and a dependent partner of Africa's development journey. In terms of bilateral engagements on the sidelines of the BRICS summit, Prime Minister met with President Ramaphosa yesterday, first thing in the morning before the summit proceedings began, and today held bilateral meetings with leaders from Ethiopia, Senegal, Iran, and the last one was Mozambique. Later this evening, he is also expected to meet some of the thought leaders, I am told, from South Africa. We all witnessed yesterday a historic occasion, and Honorable Prime Minister joined millions of Indians and the entire global community to watch the historic, flawless moment of landing of Vikram rover of Chandrayaan-3, soft landing on the surface of the moon. And he joined this momentous event through video conferencing, and as we all heard, subsequently addressed the nation regarding this scintillating achievement of India and Indian science and technology. Prime Minister was very warmly received, as again we saw right on the day of his arrival, by the Indian community and Indian diaspora here. And another round of welcome and felicitation was there yesterday in the evening after the successful landing of Chandrayaan. A major outcome of the BRICS summit, as the Honorable President of South Africa highlighted in the press briefing earlier this afternoon, is the decision of the BRICS leaders to expand its membership to include 6 new members. These 6 members are Argentina, as was announced, Argentina, Egypt, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia, and UAE. As my Prime Minister has said, India has been fully supportive of the BRICS expansion based on whatever consensus is arrived at between the BRICS member countries. We would like to believe that expansion of the BRICS would make it stronger, will bring in the value proposition of the 6 new members to the functioning and to the engagement, intra-BRICS engagement. If I was to capture what Honorable Prime Minister said across his various remarks in terms of specifics, I would say he broadly made, across different sessions, 15 broad key points. And the significance of these 15 points is that they are, one, very, very deeply anchored in India's own capabilities, India's own economic growth and potential, and 2, they interface in a very, very complementary way with the countries of the Global South, economies of the Global South, in terms of our cooperative structures in which this operates. So just to briefly, and also an element which is that how the overall international ecosystem of partnerships, cooperation, particularly the UN reforms, are significant. So if I was to just very quickly run through these 15 key points, first being a need to define timelines for the UN Security Council reforms. 2, something which we have been pushing very strongly even in the G20, the need to reform multilateral financial institutions. Why so? Because
That's one of the key needs of developmental financing for the developing world. 3, reform of WTO, long-standing, seemingly not moving. 4, which we already achieved a successful outcome today, which was the consensus among the BRICS countries to expand and include 6 new members. Given, as I said, the geopolitical and the economic churn all around, Prime Minister urged BRICS to send a global message of unity and not polarization. Prime Minister proposed creation of a BRICS space exploration consortium, coming as it did in either the backdrop or in the context of India's successful landing of Chandrayaan-3. This couldn't have been more timely and more apt. Made a very specific offer, and we have been making this offer to pretty much any country and every country which is in need and which is offering the digital public infrastructure stack of India, and not necessarily on commercial terms, but more on value terms. Whatever value you can extract. We call it public infrastructure for a particular reason, because it is more or less public good generally available for the countries of the global south. Important requirement as we go along essentially of all the BRICS countries has been that how do you map your own skill set availability within the country, the interface with the rest of the world. So he talked about need to undertake skill mapping, skilling and promoting mobility among the BRICS partner countries. He also spoke of something which is very, very deeply at the heart of South Africa and many of the other African countries, that is the protection of the big cats, the 5 big ones in South Africa, of course, under the International Big Cat Alliance. Established also, again, something which is very important for all the BRIC countries, a repository of traditional medicine among the BRICS countries. Also, something which he has again firmly believed in, led from the front, even wrote to all the leaders of the G20, which is inclusion of African Union in the G20. We have strongly proposed it, led from the front, offered our support as a permanent member of the G20. So should probably become G21 if it all goes through in that sense. The other important thing which, as I touched upon briefly also, was that importance for the BRICS countries to be sensitive to the needs of the rest of the global south, particularly in terms of developmental challenges that they face. BRICS, we all know what it stands for, which is the names of the countries, but the Prime Minister of India also gave a substantive underpinning to what each of the letters of the BRICS could stand for, in which he said B could stand for breaking barriers. You could call it economic, social, political barriers. Revitalizing economies, a central thrust given the kind of difficult times which the post-COVID period has brought for all economies of the BRICS. Inspiring innovation, naturally a direction which all countries of the BRICS want to lead to in future. Creating opportunities and, of course, shaping the future. Prime Minister also called for cooperation among the BRICS countries to address this persistent, serious challenge to the ways of our society, which is the challenge of terrorism. So cooperation to counter terrorism. Another global challenge, climate change. So environmental conservation, cyber security, food and health security, a great challenge, and to build the resilient supply chains. Prime Minister also extended invitation to all the countries to become part of many of India's international initiatives. International Solar Alliance, for example. Many of you may recall that International Solar Alliance was launched in COP15, I think it was, in Paris in 2015.
and it was just two countries, India and France, which launched it, President Hollande and Prime Minister Modi, and now it is 120 plus member organization, essentially spreading the capacity and the knowledge relating to harnessing of solar energy for economic gains, whether it is the drawl of solar energy or other ecosystem. He also spoke about one sun, one world in that sense, and one grid. Coalition for disaster resilient infrastructure. Given the increasing intensity of natural disasters, we all talk of disaster mitigation, but one of the key elements of the disaster mitigation is to build disaster resilient infrastructure, which is very, very crucial. One Earth, One Health, and the Big Cat Alliance, as I also spoke about, as also the Global Center for Traditional Medicine. Earlier this afternoon, Honorable President of South Africa gavelled the adoption of the BRICS Johannesburg 2 declaration. The document is available in the public domain for all of you to peruse, but if I was to just single out in few sentences key things there. One, position on UNSC reform, BRICS position on UNSC reform to expedite it, make it democratic, make it representative of developing countries in the council memberships, not just in general reforms, and to support the legitimate aspirations of course, South Africa, but also Brazil and India to play a greater role in the UN Security Council. Permanent solution on the public stockholding in the WTO, something which I touched upon earlier. Our emphasis on dialogue and diplomacy in the resolution of conflicts, which is posing challenge for them. Need for the BRICS countries to cooperate on counterterrorism, particularly the cross-border movement of terrorists, safe havens, the countries that provide to deal with them. Other important area which is there is the cooperation in the field of medium-scale medium enterprises, small and medium enterprises. Now, while the definition of small and medium enterprises may vary from each country of BRICS to another, but the central thrust is to move forward in cooperation in key areas of development through the small and medium industries. Cooperation in traditional medicine, nuclear medicine, financial inclusion, one of the key, I would say, felt need of the communities within the BRICS which are not part of the financial system, financially excluded communities. So how do you include them financially through technology, through the digital means? Space cooperation, you will not blame me for putting that forward. Green tourism, localization of SDGs, women empowerment. In fact, my Prime Minister speaks not just of women empowerment, but also women-led development, which is qualitatively very different from simply, I would say, part passive, part active notion of women empowerment. So he actively espouses women-led development in all aspects, and climate adaptation. Prime Minister did spend some time in laying before the BRICS and also earlier today India's role in the G20 since we hold the presidency of the G20 this year, and how G20 should also not just put forward but also integrate the priorities of the Global South into the functioning of the G20, which we are trying very, very comprehensively to do. And the inclusion of African Union in the proposed leadership of India to put forward the idea of including African Union as a member of the G20 at the New Delhi summit. Prime Minister received, and he's very grateful for that, extensive congratulations from all the members of the BRICS and also the others at the outreach today on India's successful Chandrayaan mission. But more importantly, it was seen not as India's success, but success of the developing world as such. Why? Because the capacities and the capabilities that such a successful mission brings are of considerable value for the rest of the world, also particularly the developing countries.
On the sidelines of the BRICS summit, Prime Minister had interactions with other BRICS leaders. In a conversation with President Xi Jinping of China, Prime Minister highlighted India's concerns on the unresolved issues along the LAC in the western sector of the India-China border areas. Prime Minister underlined that the maintenance of peace and tranquility in the border areas and observing and respecting the LAC are essential for the normalization of the India-China relationship. In this regard, the two leaders agreed to direct their relevant officials to intensify efforts at expeditious disengagement and de-escalation. In all, Prime Minister's visit to Johannesburg, still continuing, has already been very fruitful and productive. As I mentioned, he will be having a meeting with South African thought leaders a little while later, and would be departing South Africa later this evening. I would stop here, and if there are questions, we'll try and take them. Thank you. Thank you very much, sir. Before I begin, open the floor. Ground rules, please introduce yourself and the organization that you represent. And also, please be brief. I give the floor to you there, please. I'm Amrit Pal Singh. I'm from DD India. So my question is, you said that the Prime Minister conveyed his message to the Chinese President. Did the two have a formal bilateral meeting? Okay. Yes, sir. Next to you. Thank you very much. Puti Musumani, Inside Politics. Two questions. The first one is on the... Let me start with this one. What is India's position on the conversation on the use of local currencies? Or perhaps I should put differently and ask, would you support such an idea? Okay. The last question. As your other question? My apologies. On the first question, your specific point was, what was India's position on the use of national or stroke local currencies, correct? Yes. Okay, fine. Okay. And you had another question, if not? Yes, please. Please. The last one will be the proposal on the space consortium. How will it be funded? Thank you. Funded? Okay. Ma'am, here, please, microphone. Dozo Kumalo from Newsroom. His second question is one of the questions that I had. And the second question I have is, if we could get a little bit more detail. Sorry, could you repeat the first question again? No, my first question was that one. Second question around the He stole your thunder. Yeah, he stole my thunder. But it's obviously big business. So maybe to add to that question is, how would we navigate that space for the bloc in that race of the global space race? And then the second question, just to give a little bit more detail on the collaboration around traditional medicines and whether SMEs from South Africa specifically would be part of that collaboration in that space. Thank you. I'll take one more. I saw your hand up. I will. Yeah. Yes, sir. I'll come back to you. We'll take one round. Thank you very much. Sipaman Lekoke from ENCA. What is India's position on calls and proposals for one BRICS currency? And number two, your take on calls to de-dollarize the global economy. The first one was on common BRICS currency, right? De-dollarize. Okay, and so we take this round and then we'll take another question. So. Sure. See, let me just get the point. Yeah, let me just get the question which the colleague from the DD asked about the formal interaction or the formal meeting. Look, as I read out to you, it was a conversation with President Xi Jinping, and as I said, on the sidelines of the BRICS summit, Prime Minister had interaction with other BRICS leaders. And in that conversation with President Xi Jinping, Prime Minister highlighted India's concerns at the unresolved issues along the LAC in the western sector of the India-China border areas. A set of questions relating to common currency, national currency, how would you navigate this space, great opportunity, etc.
Look, the BRICS have been discussing for quite some time on how to make, I should say, how to put in place a mechanism through which each of the BRICS countries can at least start with doing trade settlements in the national currencies. I'm assuming that was the thrust of your question. So that is one perspective of it. I'll give you another perspective of it, which is that India has recently started taking strong steps in trying to put structures in place for trade settlement in national currencies. So most recently, just a couple of months ago, we signed India Dirham rupee trade settlement mechanism with the United Arab Emirates. Now India's trade with the UAE is roughly $90 billion, more or less balanced. It opens up a good opportunity for both India and UAE to explore that space. Now, so if you were to say conceptually, trade settlement in national currency, we have already started working on it, not just as a discussion or a talking point, but also actually on the ground cooperation. We are also pursuing trade settlements in national currencies with several other countries. So if it becomes a point of highly advanced discussions in the BRICS and the BRICS countries agree to do trade settlement in national currency, I think something which is of a great promise to within BRICS. But you do have to keep in mind that it is each country's decision to do the trade settlement in the national currency. It's not the BRICS decision, it's each country's decision. The reason for that is because there is an extensive universe of regulatory framework that you need to put in place before you do trade settlements in national currencies. After you've done that, you then need to do extensive positioning of your commercial banking channels to be able to do that, because they are the front end, the cutting teeth where the national currency trade settlement actually takes place. I mentioned this earlier someplace also. It's something of great promise for BRICS, and I think I believe the discussions have been very positive and constructed within the BRICS framework. Now, how each country progresses on that is something for each country to decide. We ourselves, even outside the BRICS, have been very, very forward-leaning in moving on trade settlement in national currencies. So far as the BRICS common currency is concerned, okay, I'm supposed to read from this, so there was no discussion. all right. No, so look, you can look at BRICS currencies in a common currency. Don't look at it as a BRICS common. Look at it as a common currency, as a conceptual framework. Common currency as a conceptual framework requires a large degree of prerequisite steps before you even begin to discuss that. Currently, it is our understanding that the BRICS systems, the BRICS mechanisms, and the BRICS leaders are focused principally on national currencies trade settlement, and not on anything else with regard to this particular aspect. With regard to the BRICS Space Consortium, the second question, also cooperation in space. Look, there is already a BRICS remote sensing satellite constellation which was established by BRICS during India's chairmanship. Space is a domain in which we have been very forward-leaning in offering our capacities in a cooperative framework with other countries. So, for example, India has a SARC satellite, which we built essentially for the South Asian Association of Regional Countries. BRICS, as I said, BRICS remote sensing satellite constellation. And the space exploration consortium that we have proposed will essentially take that as a base layer and build on it. Now, obviously, for any such concept to be
successful, it has to address the priorities which each of the BRICS countries would have. So the relevant working groups of the BRICS which would deal with this would look into this aspect, identify its elements, and the space of cooperation in space, in the field of space, or space in the field of space, is actually so extensive. It's so, I would say, productive in terms of how we integrate the capacities in this space with our own economic endeavors, that this can be a very, very promising area of cooperation, and something in which, as I said, India would be, has always been forward-leaning in terms of offering its capacities. I think the question of de-dollarization is in a way indirectly inserted. As I said, BRICS are focused more on trade settlement in the national currencies. The details on the traditional medicine and also the involvement. Look, we have the traditional medicine is I would say civilizationally anchored in the Indian society in terms of how society would address the needs of health security. It's a civilization anchor. It has its own, not many people may believe, it has its own pharmacopoeia, a well-established pharmacopoeia, well before other structures or the systems of the medicine came on board. It is holistic medicine because it's entirely a plant-based system by and large. Holistic and which can provide not just the people who use it, but also the larger global community with a form of medicine which is very healthy, holistic, had a full-fledged pharmacopoeia which is purely research-based. We think traditional medicine going forward, I mean, as an interesting aside, I would say, as the world moves forward, it begins to rediscover more and more of its original roots. And when you in the field of health domain, you go, traditional medicine is one such route which a lot of scientific community also relies on. So this is something which we think can be of great use, and yes, it's open to all segments of industry. In India, there is a fair substantial segment of traditional medicine which is medium-scale industry reliant in that sense. Also, if you look at other countries of the BRICS, South Africa, for example, Brazil, China, each one of us have their own rich support of traditional medicine. I mean, I have lived in South Africa. I lived in Durban for 3 years from 94 to 97. I know South Africa has a rich tradition. So this is something which each one of the BRICS countries has. So, and my Prime Minister is a very strong believer that this can be a good pillar for intra-BRICS cooperation and partnership. I think I Thank you, sir. Take the next set of questions. You had a hand up, please. Yeah. Thank you very much. Good evening. My name is Mawande. I'm from the Sunday World. I've got two brief questions. The first one, Foreign Secretary, as it relates to the expansion of BRICS, on the other side you have institutions like G20. Isn't there some form of duplication? I mean, for instance, G20 has been accused by critics of usurping the powers of existing, international governance bodies. Isn't this a further duplication of duties that are already done by bodies like the G20, like the UN? That's number one. Number two, on the calls for the reform of the UN Security Council, what is the precise position of India? You speak of course, there's a talk of the addition of one permanent seat, which I assume is Africa, and then you speak of India and Brazil having to play more role. What kind of role do you foresee for Brazil and India, and do you agree that a permanent seat for Africa should be created speedily, and by when? Thank you. Sudhi. So, Shruti Ranjan from Bloomberg.
So one clarification, if you could give us an understanding of the criteria and the guidelines that have been accepted by the leaders for expansion of BRICS, and specifically when the BRICS was expanded, was this applied? Number two, sir, there were some local reports that we came across which said that there was a minor faux pas when the Prime Minister landed, a diplomatic faux pas. Could you confirm or deny that, sir? Yes, there was a question here, sir. Oh, sorry. Before the ma'am, you had the microphone. Go ahead, please. Apologies, I'll come to you. Good evening, Foreign Secretary. My name is Thando Mayako from the Business Day. So on expansion, could you kindly elaborate which countries India sponsored to be a part of BRICS out of the 6 member states that were admitted? And then in terms of the countries that applied but were not successful to be admitted, what happens to them now going forward? Will BRICS create perhaps a 2-tiered member system in order so that the countries that had applied but weren't successful can also be a part of the bloc? Thank you. Yes, ma'am. Right here. It's Queen Anne Maswabi from the Daily Maverick. My question is around the inclusion of Iran on the forum. I just want to, there's a lot of criticism around that, backlash in particular. I just wanted to get a reaction from you around that. And then the other issue around its expansion is about the inclusion of Ethiopia. Why was there a push for this particular country opposed to countries like Kenya and Nigeria? Yes, sir, at the back. I think we'll take this round and close it, sir. My name is Godfrey Muchizwa, CNBC Africa. My first question, in part, has been asked, but I was going to frame it slightly differently. I wanted to ask the criteria that was used to accept the members that were taken in at this meeting, and then also to ask the question around why Nigeria is not part of on that list. Thank you. Okay. I saw another hand here. Yeah, go ahead. Hi, Bhargav Acharya from Reuters. So I have one question. Russia's foreign minister said that BRICS plans to set up an alternative payment system. विदेश मंत्रालय की सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप जोहानिसबर्ग से देख रहे थे, तो क्या कुछ बड़ी खबर निकल के आई उसकी और हम सीधे रुख करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ में बातचीत हुई है। ये बेहद महत्वपूर्ण बातचीत और LAC समेत तमाम ऐसे मसलों पर बातचीत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर। तो ब्रिक्स सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से जब बात हुई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में सीमा पर जिस तरीके का विवाद है, जो अनसुलझे मुद्दे हैं और जो तनाव व्याप्त है, उसे कम करने के लिए इस पर अपनी चिंता जाहिर की। और महत्वपूर्ण बात कि जब शी जिनपिंग से प्रधानमंत्री की बात हुई और प्रधानमंत्री ने चिंता जताई, तो उसके बाद ये एक तरीके का संकेत मिला है जिसमें अधिकारियों को निर्देश दिए जाने पर सहमति जताई गई है कि जो सीमा पर तनाव है उसे कम किया जाए। बिल्कुल, ये बेहद महत्वपूर्ण और इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि भारत और चीन को बीच में LAC पर जिस प्रकार का एक तनावपूर्ण खबरें लगातार बनी हुई हैं लंबे समय से, उसके बाद में दोनों देशों के प्रमुखों की मुलाकात और उसमें सहमति कि हम तनाव को कम करने के लिए काम करेंगे, हम LAC के एक दूसरे के LAC के को सम्मान करते नजर आएंगे और तमाम अनसुलझे जो मुद्दे हैं जिसमें LAC का मामला भी है उसके समेत हम एक तरीके से बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देने पर सहमति बनाई है। तो निश्चित तौर से बर्फ पिघलती हुई और बात आगे बढ़ती हुई, ये इस वक्त की बड़ी खबर। भारत चीन के संबंधों के लिहाज से अगर बात की जाए तो तमाम अनसुलझे मुद्दे जिसमें LAC का मुद्दा भी है और एक दूसरे की LAC को सम्मान करने की बात भी, आपसी सहयोग के साथ से इस तनाव को कम करने की बात की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर जोहानिसबर्ग से आई है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद में क्या कुछ निकला उसके बारे में विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने साफ तौर से कहा है। इससे पहले भी जब ब्रिक्स प्रधानमंत्री के दौरे की बात हुई तभी से इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से बात हो पाएगी, क्या मुलाकात होगी। और इसको लेकर अंतिम वक्त तक भी कोई बात नहीं कही गई थी विदेश मंत्रालय की ओर से, लेकिन अब विदेश मंत्रालय की ओर से जो प्रेस वार्ता की गई है उसमें इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है, जो इस वक्त की बड़ी खबर है कि चीन और भारत
दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी, उन दोनों के बीच में जो बातचीत हुई, उस बातचीत में, उस इंटरेक्शन के दौरान प्रधानमंत्री के द्वारा स्पष्ट शब्दों में शी जिनपिंग को इस चिंता को जाहिर किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा कि सीमा पर जो तनाव है उसे कम किया जाना चाहिए। और पहले भी भारत ये लगातार कहता आ रहा है कि अगर सीमा पर रिश्ते सामान्य नहीं होंगे, अगर वहां तनाव होगा तो आपसी रिश्तों में द्विपक्षीय रिश्ते भी सामान्य नहीं हो सकते। और इसी के मद्देनजर ये तनाव कम करने के लिए ये बात लगातार कही जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या शी जिनपिंग से बात होगी। और ऐसे में अब जबकि खबर आ गई है कि प्रधानमंत्री मोदी की शी जिनपिंग से बात हुई, प्रधानमंत्री ने अपनी चिंता जाहिर की और उसके बाद दोनों नेताओं के बीच इस बात को लेकर सहमति हुई है कि वे अपने अपने अधिकारियों को निर्देश देंगे कि जो प्रयास डीजीएमओ लेवल स्तर और उससे नीचे के स्तर पर तक भी जो बातचीत आगे बढ़ाई जा रही है, जो प्रयास किए जा रहे हैं, अभी ब्रिक्स से एकदम पहले भी एक बैठक हुई है, तो जो भी बातें और बैठकें हो रही हैं उसमें अधिकारियों को ये निर्देश दिए जाएं कि जो प्रयास किए जा रहे हैं उन प्रयासों को और गति दी जाए ताकि जो हालात है उसको सामान्य की ओर लिया जाए। एक सहमति दोनों देशों की ओर से जो अब बातचीत के बाद, शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई बातचीत के बाद ये खबर अब बिल्कुल। और ये ममता, ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जानते हैं कि 19 दौर की लगभग बातचीत हो चुकी है सैन्य लेवल पर। उसके बाद में अब टॉप लीडरशिप इस बात पर सहमति जताती है कि हम तनाव को कम करेंगे और कम करने के बाद में किस तरीके से उसके लिए अधिकारी को निर्देश देने की बात पर सहमति बनी है। इस खबर पर हम लगातार बने रहेंगे, तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर हमारा रुख लगातार बना हुआ। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जिसके बाद दोनों की ओर से इस बात को लेकर दोनों नेताओं की ओर से सहमति बनी है कि अपने अपने अधिकारियों को यह निर्देश दिए जाएंगे कि वे जो तनाव व्याप्त है उसे कम करने के प्रयास आगे बढ़ाएं ताकि स्थिति सामान्य हो सके। हमारे संवाददाता अमृतपाल इस वक्त सीधे जोहानिसबर्ग से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमृतपाल, हमने देखा कि पहले जब डोकलाम में भी तनाव व्याप्त था तो उस समय भी G20 के मंच पर जब प्रधानमंत्री की बातचीत हुई थी उस वक्त, तब उसके बाद ये तनाव को कम करने के उस वक्त भी प्रयास ज्यादा रफ्तार पकड़ रहे थे और जिसके बाद हमने हालात सामान्य होते भी कुछ हद तक देखी। लेकिन अभी भी फिलहाल वहां पर डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। बातचीत के दौर तो हो गए हैं, लेकिन ये जो खबर अब आ रही है कि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में इस बात को लेकर सहमति बनी है कि अधिकारियों को निर्देश दिए जाएं, कितना इससे असर पड़ सकता है और कितनी सकारात्मक हो सकती है खबर तनाव को कम करने को लेकर? देखिए, दोनों ने जब बातचीत की और प्रधानमंत्री ने भारत की चिंताएं चीनी राष्ट्रपति को बताई कि एलएसी की जो सिचुएशन पर भारत के जो कंसर्न्स हैं, तो उसके बाद भारत के फॉरेन सेक्रेटरी का ये कहना है कि दोनों लीडर्स ने अपने ये एग्री कर लिया कि वो अपने ऑफिशियल्स को जो डी-एस्केलेशन है उसको एक्सपेडाइट करने को का प्रोसेस शुरू करेंगे। अब डिसएंगेजमेंट होती है नहीं होती, वो हमने देखा है कि 19वां मिलिट्री कमांडर्स राउंड चल गया, वहां पर तो सहमति बनी नहीं। उन्होंने कहा कि आगे के लिए हम करेंगे। अब ये देखना होगा कि इसका जमीन पर क्या असर पड़ता है और कैसे इसके जो फाइनल पॉइंट्स हैं, क्योंकि वो मिलिट्री कमांडर्स और डिप्लोमैट्स ने एग्री अपॉन करने हैं। हुआ ये है यहाँ पे जोहानिसबर्ग में कि दोनों राष्ट्राध्यक्ष, मतलब भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति के बीच में ये सहमति बन गई कि अपने अधिकारियों को इस जो डी-एस्केलेशन का प्रोसेस है उसको एक्सपेडाइट करने की डायरेक्शन दी जाएंगी। अभी तक ये इतनी बातचीत आगे बढ़ी है, बाकी इसका असर क्या होगा वो ग्राउंड पर जो मूवमेंट होगी उससे क्लियर होगा। जी अमृतपाल, लेकिन ये महत्वपूर्ण चीज है और बड़ी खबर इस वक्त की, और हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने भी इस बारे में सवाल किया, निश्चित तौर से ये बात और बड़ी खबर अपने आप में निकल के आई, लेकिन चीजें अब आगे अनफोल्ड होगी कैसे? क्योंकि आपने कहा कि 19 लेवल के कमांडर लेवल की, मिलिट्री लेवल की बातचीत हो चुकी है, बहुत कुछ बात आगे बढ़ी, लेकिन पूरी तरीके से सहमति नहीं बनी। लेकिन अब जब डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत होने की शुरुआत होगी तो क्या और ज्यादा बेहतर तरीके से एक माहौल बनता नजर आएगा? टॉप लीडरशिप जब तय करती है कि हमको तनाव कम करना है, तो क्या एक तरीके से वो चीजें ट्रांसलेट होती नजर आएंगी? चीजें अनफोल्ड कैसे आगे होती है जब टॉप लीडरशिप तय करती है कि हाँ हमको तनाव कम करना है?
देखिए पॉलिटिकल लेवल सॉरी डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल पे एंगेजमेंट चल ही रही है। अब इसको प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी ने एक पॉलिटिकल पुश देने का प्रयास किया है। यहाँ जोहानिसबर्ग में जो उनकी ब्रीफ मुलाकात हुई, फॉरेन सेक्रेटरी ने ये साफ कहा कि उनकी फॉर्मल सिट डाउन बायलैटरल मीटिंग नहीं थी, एक इंटरैक्शन था। इनफैक्ट अगर आपने आज दोपहर को देखा हो कि जब जॉइंट प्रेस वार्ता से पहले जब दोनों लीडर चल के जा रहे थे तो आपस में बात कर रहे थे। इसका लेवल ऑफ द पॉलिटिकल वेट बिहाइंड द डी-एस्केलेशन प्रोसेस, पर डी-एस्केलेशन कितनी हो पाती है वो ग्राउंड पे बिल्कुल, तो ये माना जा सकता है कि जी बिल्कुल अमृतपाल, तो ये माना जा सकता है कि अब टॉप लीडरशिप की ओर से क्या पहल की जाएगी और कहां तक वो जमीन पर एक असर दिखाती नजर आएगी, इस पर नजर आएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमृतपाल, जोहानिसबर्ग से सीधे हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आज इस न्यूज नाइट के इस विशेष अंक में बस इतना ही, लेकिन लगातार डीडी न्यूज पर खबरों का सफर बना रहेगा। मुझे और मेरी सहयोगी ममता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।